switching modulator, right? No, not switching modulator, हमने कर लिया है, ring modulator. So you will have this is a ring modulator. And ring modulator is a kind of product modulator actually. So it is a circuit or a device that gives the product of the two input signals. Okay. Visible है तुम लोग को writing board ना? Hello. Yes, sir. So this is a circuit for ring modulator in this one. This is a circuit for your ring modulator. Okay. So you see in this circuit, so in this circuit, actually this is a diode. There are 4 diodes we have connected in a particular fashion. This is your modulating signal, okay, and this is your carrier signal. So you see, this is your carrier CT, right? So actually you have connected here your same signal AC cos 2 pi FCT. So this is the carrier signal, and this is your modulating signal, message signal. Okay. So later on, this will analysis for the sinusoidal signal, but for example, for that matter, you can connect any other your modulating signal. Now these 4 diodes have been making a ring type. If we see like this, so that is why it is called a, the name has given a ring modulator. So how it works, you see, that is, if you see the let us say this is your plus and this is your minus sign, and for sinusoidal signal, if this empty is like this, a sinusoidal wave, let us say this is a sinusoidal wave, of course, okay, and we assume that this modulating signal has small, so we assume that this this empty signal, the magnitude is much less than your magnitude of CT signal. So that means in switching the diode, the carrier signal plays only the role. Okay. So if we see this signal, let us say this carrier signal will also be like a sinusoidal signal. Okay. So this will be, let us say, plus and minus. So in this plus and minus, if you see that this diode will be positive and this diode will be positive as well. Okay, I mean, so in first half cycle, uh, for positive cycle, in fact, for positive half cycle, in fact, this D1 and D3 will be on condition, and D2 and D4 will be in off condition. So in that way, this will be
you see this when they are on condition and they are off condition, so that is open circuits. Okay, so ideally when it is off it is open circuit, and when it is on it is a short circuit. so ये आपके शॉर्ट हो गए. so this output अगर हम एच टी को लें, so this एच टी will be your एम टी, क्योंकि आपका जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेगा. एंड फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, for negative half cycle, you'll see that is then this will become a negative and this will become a positive. In that condition, you see this D1, D3 will become off and D4 and D2 will become on. So in this condition, your D1 and D3 will become off and D2 and D4 will become on. Okay, so in this case what will happen is that this will become an open circuit, ये open हो जाएगा, ये open हो जाएगा, they will become a short circuit, right? So what will happen is that is it will become a minus empty. So आप देखो क्या हो जाएगा कि ये जो polarity है वो यहाँ पे आ गया, and this signal will, because this is a short circuit, right? So this will be become a like this, और ये आपका जो है यहाँ पे आ गया शॉर्ट सर्किट. सो दिस विल बिकम माइनस एम टी. सो द एच टी विल बिकम ए माइनस एम टी. ठीक है. सो दिस इज द so actually what happened is that so what does it mean? इसका मतलब ये हो गया आपका कि you can say that this ST is actually becoming an empty, and इसको आप ये कर सकते हैं, एक गेटिंग पल्स दे दीजिए, एक पल्स, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि -1. ठीक है ना. ओके, इसको -1 तो लिखना जरा मुश्किल काम है, इसको जो है ऐसा करें. तो एक्चुअली इसको आप ये कह सकते हैं, दिस बिकम्स इनटू ए प्रोडक्ट टाइप signal PT, pulse train, and this will be a signal like this, right? So you are multiplying a signal like this. This will be +1 and this will be -1. Okay, so this becomes a, let us say, signal PT. so जब आपका ये पॉजिटिव होगा तो आपका जो प्लस एम्प्टी मिलेगा, और जब नेगेटिव होगा तो माइनस एम्प्टी मिलेगा. so this whole circuit can be mathematically modeled as a square, sinusoidal square. I mean, it's a rectangular pulse. It may be rectangular, it may be square, doesn't matter. It may be a rectangular pulse. So now how to, so if you take this signal, again I told you that is you have to take the Fourier transform. So if you take the Fourier transform of this PT, you can write this as so write this as,
So this will be a this is the Fourier series of your pulse wave, right? This is the Fourier series representation of uh, pulse wave. ठीक है? So this is आप इसको इन्होंने CT से लिखा है because initial writing PT. So this is the same as CT. The CT is instead of your this carrier, it behaves like a pulse wave. Okay. So now, so this means as I told you that is this ST will be a product of so this means as you told that is this ST इसको थोड़ा सा मैं ऊपर से मिटा दो फिर लिखता हूँ ठीक है now you see that is here your CT has can be represented in this case the carrier can be represented by this mathematical equation okay and the MT we have the MT is a modulating signal this becomes a Fourier series representation of CT carrier right and then your this is a modulating signal of course you know that is this is MT is the modulating signal okay so this output and I told you this is a DSP right we are talking about the DSP modulator so this will be a DSP signal right so the output modulator output ST you can write as ST is equal to this is your MT into CT right that we have already told you so you can write this as MT and इसी को तुम लोग फिर से लिख लो so 4/5 summation and we will go from -1 to plus infinity we are taking only the चूंकि minus infinity हम नहीं ले रहे हैं so this will become -1 power n minus 1 divided by 2n minus 1 cos 2 pi fc 2n minus 1 t ठीक है सो अब इसको थोड़ा सा और कर लो वर्कआउट कर लो
So empty, this is your 4/pi यहाँ कर लो चाहो तो, into 4/pi, this is the constant. अब n की वैल्यू जैसा जो है -1 रखो, कितना हो गया? पुट द वैल्यू ऑफ n एज -1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? बोलो जी जल्दी से, क्या हुआ? ये -1 से क्यों रखा हमने? 1 से लिया ना, ये -1 छोड़, इनफैक्ट तुम 0 से शुरू करते हो इसको, ठीक है ना? यू टेक दिस वैल्यू एज इसको +1 से लिया हमने, ठीक है ना? 1 से करो, सो व्हाट विल हैपन? क्या हुआ? हेलो, अरे तुम लोग हो यहाँ पे? आर यू लिसनिंग? Yes, sir. Yes, Sir. तुम सो रहे हो क्या? इसको करके दिखाओ कितना होगा। 1 पे रखो तो कितना आया ये? बहुत ही बड़ा कद है सब भाई। cosine 2 pi FCT. हाँ, Cosine 2 pi FCT. cos 2 पाई n की वैल्यू 1 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा FCT, ठीक है ना? इनफैक्ट अगर तुम 0 से लेके चलोगे तो तुम्हारा जो है ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना? प्लस अब बताओ कितना आया? साइन को लो 1 2 रखो, कितना आया 2 रखोगे तो? Minus of cos 6 pi ft by 3. ये क्योंकि 2 रे -1, ये 1 आ जाएगा, ये Minus -1 आ 1 by जाएगा, 3. तो दिस विल बी माइनस 1 by 3. cos 1/3 आएगा ये। क्यों? ये तुमने रखा 2, हाँ तो 4 1/3 आ जाएगा, सो दिस विल बी 1/3 माइनस 1/3 cos 2 पाई, ये 4 5 हो गया तुम्हारा, 5 FC 3 आएगा सर, 3. 3 आएगा। अच्छा ठीक है, माइनस करना, सॉरी, 3 FCT, ठीक है। एंड फिर तुम करोगे अगली बार ये पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि एक बार माइनस आ गया, पॉजिटिव आएगा, 3 रखोगे तो, ठीक है ना? सो दिस विल बिकम रफली 1/7 हो जाएगा तुम्हारा ये, 6 नहीं 5, 1/5, राइट? एंड cos 2 पाई FC इंटू, अब कितना हो गया? 5 हो जाएगा. 5 5t. तो ये 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी कैसे? ये 3 है ना, सॉरी 3 है, 3 है. हाँ, सो ये 5 T, ठीक है ना? Okay, and you can go on like this, okay? So we are not interested all because these are the harmonics and it will keep on going up to infinity, ठीक है ना? तुम यहाँ 0 भी रख सकते हो, एटलीस्ट अगर 0 रखो कितना आ जाएगा? ये 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? इसको देख के देखो तो ये तुम्हारा 1 आ जाएगा या माइनस नेगेटिव में आ जाएगा। सो वी डोंट वांट टू गो इन नेगेटिव, सो इसलिए उसको 1 से शुरू किया है, बट एक्चुअली इट गोज फ्रॉम -infinity टू +infinity। तो बहुत ज़्यादा सिंपल करने के लिए आई हैव टेकन ओनली 1। सो नाउ दिस विल बी, अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कि 4/5 4/pi mt cos 2 pi FCT minus 4/3 pi mt cos ये 3 है तो 6 पाई हो गया,
6 pi FCT and plus 4 by 5 pi and cos 10 pi FCT, and it will go up to infinity. We are not interested, दो चीज आपका काम हो जाएगा. So now ये रिंग मॉड्यूलेटर है, इसको बनाया इन्होंने. इसके पास सिंपली एक बैंड पास फिल्टर लगा दो, ठीक है ना. सो एक्चुअली ये हमें इसको D0HT नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि तो एक्चुअली ये यहाँ पे आएगा. यहाँ पे एक बैंड पास फिल्टर लगेगा तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है ना. यहाँ पे इसके आगे एक बैंड पास फिल्टर लगेगा, ठीक है ना. बैंड पास फिल्टर. सो इफ यू अप्लाई, क्योंकि इसको क्या है, हमें व्हाट वी वांट दिस सिग्नल ओनली, इसको हमें कट करना है, ठीक है ना. तो इट्स फ्रीक्वेंसी कितना हो गया आपका जो है, ये आपका 3 FC हो गया, और ये 5 FC है, फिर आपका 7 FC एंड सो ऑन. तो यू कैन सिंपली पुट ए बैंड पास फिल्टर, so pass it to a band pass filter, right. तो if you pass it a band pass filter, तो क्या हो जाएगा, ये सारे कट जाएंगे, and you will get, this is will become a DSB signal as 4 by pi MT cos 2 pi FC3. So you will get this signal, right. Okay, and this is a double sideband SCAM signal, right. So this is what we are looking for. So that circuit is exactly working to generate a double sideband DSB amplitude modulator. Okay. अगर जो तुम चाहो तो MT की वैल्यू को ये कांस्टेंट तुम्हारा हो गया, राइट. ये 4 बाई पाई ये कांस्टेंट है. 4 बाई पाई को तुम देखो तो ऑलमोस्ट तुम्हारा 1 के बराबर ही आता है, बिकॉज यू नो दैट पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3. So that approximately, but slightly it will be become a so if we go that, अब इसको मेरे ख्याल से फर्दर मुझे एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू गो दिस वन, मिटाओ इसको मिटा देते फिर से. सो अगर जो इसको हम देखें फिर से, सो फाइनली we have got this HT as 4 by pi MT cos 2 pi FCT, and MT की वैल्यू put the for sinusoidal modulation, so that sinusoidal means MT will be your sinusoidal, so AM cos 2 pi, this is your FMT. So for this case you can have, this is 4 by pi, okay, और आपका आ गया, this is your AM cos 2 pi FMT into cos 2 pi FCT, right. So इसको आप जो है क्या कर लेंगे आप, so this becomes same, right. ये आपका जो है, so ये 4 AM
बाई 2 पाई, और ये हो जाएगा कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी प्लस कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी, राइट। सो अगर ये सारे कांस्टेंट को हम मिला के एक सिंपल कांस्टेंट बना दें, सो दिस विल गेट सो देन दिस विल गेट, इस सबको एक कांस्टेंट होगा तो तुम ये कर सकते हो कि एक कांस्टेंट ए, ठीक है ना, कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी प्लस ए cos 2 pi fc plus fmt, right? And if you plot the frequency spectrum of this, so if you plot the frequency spectrum of this is your sf and this is your f. So you will get two components. One is your fc minus fm, and the another will be your fc plus fm. And this is simply a DSB. So you know that this is your lower sideband and this is your upper sideband. Okay, that's good. That's all. So this is a two circuits we have already discussed. Okay, and okay, so I think any question in that? Any questions in that? No, sir. So let us see. Go for the second uh, kind of modulation. So so for that अब हमारे पास रह क्या गया, इसको पूरा डिलीट कर। So now let us say uh, single sideband, right? So single sideband, or you can say that is SSB uh, module generation. ठीक है ना? So we'll study the generation of uh, single sideband. ठीक है? So for single sideband, you know that single sideband क्या होता है? If you take you know that single sideband, इसको ब्लैक से ही कर लो, ब्लैक से ज़्यादा पढ़ने में आता है। You think what is single sideband? Single sideband क्या होता है कि if you see the frequency spectrum, so the frequency spectrum of this is your FC, and let us say this is your FC plus FM, and this is your FC minus FM, right? So मैं ट्राइंगल से बना दे रहा हूँ, ये कोई इशू नहीं है, आप चलो ऐसे ही बना दे रहा हूँ जैसे बन रहा है, ठीक है ना?
right? So and so this is your uh, DSP actually. So this is your actually a DSP. Okay. So here you have a this is your upper sideband, and this is your lower sideband. ठीक है. And what is SSB? SSB क्या है? बोलना नहीं बच्चों, बोलने का तुम लोगों ने कसम खाई है कि हम जिंदगी में कुछ करेंगे नहीं, अरे न पढ़ना है. हाँ जी, SSB क्या है? What is SSB? Anybody? इतने गधे बच्चे हैं, इनको पढ़ाना तो वाकई मुश्किल है. अबे तुम लोग को SSB अभी पढ़ाया था ना मैंने, कि 2-4 साल पहले ही पढ़ाई बात है. Anybody? बहुत ही बच्चे नालायक बच्चे. सो हेलो, कोई है वहाँ पे? तुम लोग क्लास में कोई है? सर हेलो। हाँ, तुम लोग क्लास में हो? तुमको लगता है कि तुम लोग क्लास में हो? मैं पूछ रहा हूँ SSB क्या सब सो रहे हो? देखो एक चीज बता रहा हूँ, तुम लोग को जो टेस्ट होगा ना, वो टेस्ट नहीं, वो मैं वाइवा लूंगा, ठीक है ना? और उससे वैसे मार्क्स जाएंगे इंटरनल असेसमेंट आप लोगों के. तुम भूल जाओ कि घर से बैठे बैठे रट लिख दे तुम पास हो जा रहे हो तुम लोगों को. सो वेन एवर डेल बे टेस्ट, वो टेस्ट तो रिटेन होगा, लेकिन होगा उसके उसके मार्क्स 20% देंगे हम, जो वाइवा लेते रहेंगे. अभी तुम लोग का शेड्यूल में वाइवा शेड्यूल कर रहा हूँ इसके ऊपर. ये टॉपिक खत्म करने के बाद आई विल शेड्यूल 1 वाइवा, ठीक है ना? SSB तुम लोग पढ़ाया तो सुना नहीं तुमने? SSB नहीं पढ़ाया क्या तुम्हें हमें? इससे बात करना ही बेकार है. हेलो आनस. यस सर। सर एसएसबी में सिर्फ सिंगल साइड बेंड प्रेजेंट होता है, या तो लोअर प्रेजेंट होगा या अपर होगा। अबे तो तुम गधा है बिल्कुल, मारने के बाद तू बोलेगा? ये बात पहले नहीं बोल सकता था तुम? इसमें कौन सी मतलब रॉकेट साइंस आ गई है? जब तक तुम्हारा नाम नहीं तुम बोलोगे नहीं. क्लास में 2 बच्चे तो ढंग के पढ़े लिखे हो यार, जिनसे हम पढ़ा जिनको हम पढ़ा सको. बाकी तो जैसे जो गधे निकल जाएंगे ऐसे ही. पूरी क्लास लगती है 1 घंटा पर जैसे. ये बात तुम पहले बता सकते थे ना मुझे. ओके सर, आप आपसे नहीं होगा सर। मैंने कोई नाम तो नहीं, जब तक तुम लोग का नाम लेके खड़ा नहीं करो तब तक बोलोगे नहीं. बिल्कुल नर्सरी क्लास से बच्चों की तरह से बेंच पे खड़ा कर दो तुम लोगों को. पढ़ाने का पूरा टाइम है तो मैं मूड खराब कर तुम लोग जो है.
So, so in SSB, you transmit only one sideband, right? So that we already know. So what does it mean? We have to transfer only one sideband, and you know that is this is your FC, right? So this is one sideband, and this bandwidth is for your another sideband. Okay. So what you can do simply क्या करना आपको जो है कि you have to use if you have to filter out in one sideband, let us say कि हम जो है lower sideband को filter कर रहे हैं, तो what you have to do, you have to simply use a band pass filter, okay, uh, of appropriate type, of course. So if you have to use simply a band pass filter, okay, so this means if you use a band pass filter, so the band pass filter characteristics will be like this, okay. This is the characteristic of band pass filter, okay. So this is the band pass filter, okay. So this means if we want to generate uh, this single SSB, then to simply you have to generate a DSB, and DSB we have seen you have to using a product modulator, right? So simply generate a DSB and use a band pass filter to filter out any one side band. Okay, so this means this is the simple circuit you can use. Okay, so what we are using here, this is product modulator. Okay, this is a product modulator. Actually, what a product modulator, as I told you, the ring modulator that I have told you earlier, this is a kind of product modulator, right? So product modulator simply क्या करता है, अगर जो आप अब आपको इन नटशेल हम बता दें, तो एक आपका हो गया प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, राइट. सो दिस इज ए प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, और आपने यहाँ पे लगा दिया आपने एक लेटेस्ट से एमटी, और यहाँ आपने लगा दिया, बल्कि आप और यहाँ पे लगा दिया आपने लेटेस्ट से वीटी. तो इन दोनों का आउटपुट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सिग्नल एमटी इंटू वीटी. तो ये आपका प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर. एंड इसके सर्किट कैसे बनेगी, वो रिंग मॉड्यूलेटर बना रखा हमने आपके लिए. इनफैक्ट दोनों मॉड्यूलेटर जो आपने दिया है near future only the product modulator. Okay. So so this is the, so it will generate a DSB signal, और इसके पास आपने बैंड पास फिल्टर लगा दिया. So when you use a band pass filter, let us say कि हमने क्या किया, then the output of this, then this after band pass filter, you will get the output as sorry, draw करना is very difficult. So right, this is your FC, and this is your FC plus FM, right?
So you will get, ठीक है ना? So this will be your okay. So this is your, so this output you will get this output. Okay, this is your frequency and this is your of course HT. इसको यहाँ पे ऐसे कर लो तो this will be your HT, HT तो नहीं SF लिखो. So this will be your here, this output is your SSB. ठीक है ना? So this where we are continuing as an this is your as a uh, output of and of course we are taking this upper side band. Okay, आप इसी तरह से आप चाहें तो फिल्टर को इधर लगा दोगे तो लोअर साइड बैंड आप भी ले सकते. You can send any one side band. Okay, so this is your now since we are sometime this method is also called, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी को हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है ना? सो दिस इज कॉल्ड this is also called a frequency discrimination method. ठीक है ना? So this is also called a frequency discrimination method for the generation of SSB. Now what is the problem here? Okay, so main issue is that so what are the problem challenges you are facing in this case? So what happened is that is we are using a this is your, what we have used here is your बैंड पास फिल्टर. और आपने क्या किया है कि ये बैंड पास फिल्टर की आपने ये कैरेक्टरिस्टिक ले रखा है, ठीक है ना? सो दिस इज योर बैंड पास फिल्टर, राइट? और ये FC है और ये FC प्लस FM है. बट एक्चुअली इन प्रैक्टिस getting this band pass filter is not possible, right? It is a very difficult. In fact, ideally and practically it is not possible. So the practical band pass filter कैसे बनता है? Practical band pass filter is like this. Practical band pass filter is like this. So if you make a practical band pass filter, तो अगर जो हम इसको इस तरह से बनाएं practical band pass filter को, so what will happen is that is then we will receive this signal as well. Okay, so practically, this is a problem. So this portion is an additional. Okay, so let us say this is one is your delta F. So actually, so practically, since practically getting a this type of band pass filter is impossible or it is very costly, so this method cannot produce the exact SSB signal. Okay, that is, it is not very. However, if you are able to tolerate, क्योंकि इसमें कोई information आपका loss तो है नहीं, कुछ information addition है, but so the bandwidth will be, इसमें फिर होगा क्या? The bandwidth will increase. So instead of bandwidth यहाँ पे कितना हो रहा है? FM, but यहाँ पे कितना हो जाएगा? FM plus delta F, right? So the bandwidth will increase, फिर obviously power content will increase, so it will be not a exact SSB. In fact, later on आपको हम ये कहेंगे कि इस चीज को हम बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं VSB. हेलो, हाँ,
अच्छा चलो आज मैं मालूम करता हूँ, ठीक है ना, आज मैं से मालूम करता हूँ, मैं से मालूम करता हूँ। अब बैठ की प्रॉब्लम क्या हो, दूसरे काम में ऐसे लगे रहते हैं, उसमें बेचारा मसला है। चलिए आज मैं भिजवाता हूँ बात करके उनसे, ठीक है ना। ठीक, कोई फायदा नहीं, मत मिलो, कोई फायदा नहीं, वो कहेगा आपके हिसाब से मिलो आदमी। मैं आज बात करता हूँ पहले, फिर बताऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। ओके। सो दिस इज कॉल्ड VSB मॉड्यूलेशन। ये भी आपका है मॉड्यूलेशन, इसको पढ़ाऊंगा नहीं आप लोग जो है, क्योंकि पढ़ नहीं है DSB मॉड्यूलेशन। एंड दिस इज कॉल्ड वेस्टेजियल साइड बैंड, वेस्ट साइड बैंड मॉड्यूलेशन, राइट। सो इसका एडवांटेज क्या है, सब लॉस तो है, बट आपको लो कॉस्ट सर्किट कैन बी यूज, तो इसकी कॉस्ट कम आती है, इसलिए मोस्टली जो है ओल्ड टेक्निक्स में यूज हो रहे थे, अब तो कोई यूज नहीं हो रहा है। दिस इज द टेक्निक दैट है, बट SSB के बजाय वी आर यूजिंग VSB, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट कि सर्किट कॉस्ट विल रिड्यूस, अदरवाइज आपकी जो है बैंडविड्थ विल इंक्रीज एंड पावर विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो इसको कहीं नोट डाउन कर लो, और बाकी डिटेल आप खुद से पढ़ना VSB के बारे में, ठीक है। Okay, so I will stop over here. Any question? No question, वो तो मुझे पता है तुम लोगों को, ठीक है। So I will stop here and